हेलो जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। वेलकम बैक टू अनवांटेड टॉक्स। द इंटरव्यू सीजन हैज़ फाइनली कम टू एन एंड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे व्हाट ऑल कॉलेजेस डिड आई कन्वर्ट, व्हाट ऑल इंटरव्यूज डिड आई अटेंड एंड हाउ वाज माय एंटायर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग विथ वेलिंगर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू कॉल था ऑफ द सीज़न। यू नो दैट फर्स्ट बूस्ट कि आपको कोई कॉलेज इंटरव्यू के लिए तो बुला रहा है एटलीस्ट। दैट वॉज वेलिंगर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट फॉर मी. So my interview was scheduled on 8th of Feb 2025. Process smooth था. If you want to know in much more detail, the links have been in the description box. वहाँ जाके आप डिटेल में सुन सकते हो how was my interview experience. And yeah, it was pretty decent. It was majorly based on my engineering background and artificial intelligence or machine learning, and yeah, a lot have was discussed about, like, technology. My second interview was the second call, I should say, which I got for was IMT Nagpur and Hyderabad. Now ये आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट या IMT मैंने अप्लाई सिर्फ IMT गाजियाबाद के लिए किया था. एनीथिंग बिलो दैट wasn't something which I was willing to go for. So that interview was scheduled on 15th of Feb, and no, I did not attend that interview. I get it, नहीं करना चाहिए था ऐसा, but that was a pretty personal choice. Now, my third interview was IRMA. That was the first college, like, जो कि ऐसा था कि like it was a proper tier 2 college, very respectable one. That interview was scheduled on 18th of Feb, which was offline at the Mumbai campus. So yeah, वो interview like अच्छा था. There were only group of 10 people which were, like, attending the interview on that particular slot, and अच्छी connections भी बनी लोगों से. There was a lot which we discussed together, and हाँ, that was one of the memorable इंटरव्यूज़ आई शुड से, बिकॉज ये सब तो बिफोर इंटरव्यू ही हमारे इतने ज़्यादा कनेक्शंस बन गए थे. एंड इवन इन द इंटरव्यू देयर वर 2 फीमेल पैनलिस्ट. उन्होंने बहुत कुछ पूछा, बहुत कुछ जानने की कोशिश की अबाउट मी, माई बैकग्राउंड, एज वेल एज कि ये जो रूरल इंक्लिनेशन है ये क्यों है और कैसे है, एंड हाउ वेल एम आई जस्टिफाइंग इट. द इंटरव्यू वेंट एब्सोल्युटली वेल, एंड यू गेट दैट फीलिंग, राइट, जहाँ आपके इंटरव्यू में कोई ऑकवर्ड साइलेंस नहीं है. देयर इज़ अ फ्लो ऑफ कन्वर्जेशंस. सामने वाला आपसे पूछ रहा है, आप उसे आंसर कर रहे हैं, एंड दैट टू शेयरिंग योर ओन एक्सपीरियंसेस विद दैम. इट वाज अ माइंड बॉगलिंग एक्सपीरियंस, genuinely. Now, my next interview was GIM, that is your Goa Institute of Management. I was only shortlisted for the healthcare course, which I was not very interested into. However, because that was one of the good options which I had in my hand, तो ऑब्वियसली मैंने वो इंटरव्यू दे दिया था. इट वॉज एन ऑनलाइन इंटरव्यू. वो इंटरव्यू पर्सनली आई डिड नॉट, लाइक, इट डिड नॉट गो एज आई वॉन्टेड टू. ऐसा होता है ना कि पैनलिस्ट, लाइक, जो थे, देयर वाज वन मेल पैनलिस्ट एंड वन फीमेल पैनलिस्ट. दे वर नॉट रियली ईगर टू लिसन टू द आंसर्स. ठीक है, इंटरव्यू आपका तब सही जाता है जब सामने वाला पूछ रहा है और आप आंसर कर रहे हैं, और आपको समझ आ रहा है कि अच्छा, द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज ऑल्सो ईगर टू लिसन टू और अंडरस्टैंड दैट वॉट आर यू ट्राइंग टू से एंड वाई आर यू सेइंग दिस. सो दैट वॉज दैट. वो ठीक ठीक ही गया था, आई शुड से. कन्वर्जन्स की बात हम एंड में करेंगे. ठीक है. नाउ माई नेक्स्ट इंटरव्यू वॉज फॉर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट. दैट इज़ लाइक वो 10th मार्च को था, in online mode, obviously. Achha, this was one of the interviews which I was, like, very willing to, because IMI and 4, these were the top preferences on my college list. And finally getting this call from 4 was, like, ऐसा लग रहा था कि okay, एक sense of achievement और आ गई है. Now the courses which I was shortlisted for, वो चारों ही courses थे. That was your PGDM FM, also BDA or international business, if I'm not wrong. Now, that interview was scheduled on 10th of March. This was also a very, very great, I should say, interview, because उसमें उन्होंने 4-5 पैनलिस्ट रखे थे. वन ऑफ द फर्स्ट इंटरव्यूज जहाँ मैंने इतने सारे पैनलिस्ट देखे थे, एंड आई वाज लाइक डैम, इतने सारे. एंड वो सब एक के बाद एक, दे वर लाइक क्वेश्चन पे क्वेश्चन, एंड अंडरस्टैंडिंग कि आप HR से टेक्निकल से HR, एंड बीच में बिहेवियरल क्वेश्चंस कुछ. it was like, it was a thriving one, but yes, I absolutely loved it. एक जो इंटरव्यू के एंड में एक जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है ना, दैट डैम, आई डिड दिस.
And how even I did this, ये क्वेश्चन मार्क है, बट या इट वॉज वन ऑफ द अमेजिंग इंटरव्यूज आई शुड से. नाउ अच्छा, बीच में आई मिस्ड आउट ऑन XIMB का इंटरव्यू. आई वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर 2 कोर्सेज, दैट वॉज योर रूरल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट. एंड व्हाट डू आई इवन से, मेरे 3 इंटरव्यूज एक ही दिन शेड्यूल हो गए थे. दैट वॉज IRMA, XIMB RM एंड XIMB SM. आई वंडर, वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था, वेर लाइक बैक टू बैक इंटरव्यूज दे रही थी ऑनलाइन मोड में, एंड देन आई रश्ड टू द ऑफलाइन सेंटर फॉर IRMA. डैम, इट वॉज अ डे, लाइक लेजिट. Next, अच्छा, talking about the experiences of XIMB, well, there were, I guess, 3 panelists, if I'm not wrong. दोनों ही interviews में 3 panelists थे, and they were asking, I was answering, and yeah, it was a great interview, I should say. And I get it. जब one of the panelists at the end, he said that you're an interesting person to talk to, and I was like, oh damn. That was what I felt inside, that अच्छा, it means कि interview में कुछ तो सही हुआ है. Now next interview which I went for was TapMi, and yeah, I was shortlisted for all the courses at that moment. And yeah, it was a good experience. Offline tha, and yeah, the process was great. And interview process also, like, no, बहुत सारे questions थे. Initially they stuck to my ZAT score, that okay, ZAT score इतना है, तो I scored pretty less in quant, so they were questioning about that. And after which they went on to marketing, and then उसके बाद फिर offline and quick commerce and this and that. So yeah, the entire interview revolved around that only. Was it a good interview? It was a satisfactory interview. Okay, now the next interview was IMI Delhi, that was scheduled on 3rd of March. IMI, I mean, थोड़ा सा I was turned off by the management, because देखो ऐसा हुआ that there were 2 panelists, one panelist with the camera off. Like, come on, this is one of the interviews which I saw कि जहाँ panelist ही camera off करके बैठे हुए हैं. I mean, how does it even make sense? But yeah, it was that. And like वो स्टार्ट ही थोड़ी अजीब हो गई थी, बिकॉज आपको समझ आ रहा था दैट दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन टू लिसनिंग व्हाट आर यू ट्राइंग टू से. तो आप कितना भी बोल के उस इंटरव्यू में वो रैपो बिल्ड ही नहीं कर सकते जब सामने वाला सुनने की कोशिश ही ना करे. तो सो या, इट वॉज दैट, नॉट मच टू टॉक अबाउट दैट, नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. नेक्स्ट वॉज BIMTech, इट वॉज ऑन 6th of March. What an interview. Rather, I should say, what great panelists do they have. Like, genuinely, this was the first interview where they were introducing themselves first. वरना ऐसा होता है कि बस आप बैठ गए and they start grilling you on and off. No, यार, BIMTech is, it's such a great faculty they have यार. उन्होंने पहले खुद को इंट्रोड्यूस किया, फिर उनके साथ जो एक मैम थी पैनल में, उन्हें भी इंट्रोड्यूस किया, एंड देन दे स्टार्टेड विथ मी. आई मीन, वो एक जो सेटलिंग एनवायरनमेंट होता है ना, वही बहुत अच्छा बन गया था. एंड या, द एंटायर कन्वर्जेशन रिवॉल्व्ड अराउंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, माई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, मार्केटिंग, MBA, why MBA, everything. Like, literally, when I say everything, I mean everything. But at the end, it was a great interview, absolutely satisfactory. बहुत मज़ा आया था. Another interview was IFMR. Okay, now till the time the interview was scheduled, तब तक मेरे बहुत सारे conversions आ चुके थे. Which conversions? I'll discuss in this video later. So yeah, I skipped that because I understand it's a pretty decent college, but like it is majorly for finance, and finance में मेरा उतना ज़्यादा कोई inclination नहीं था. So yeah, I skipped that. Now, coming to the conversions which we have, the first conversion which we had was Wellinger School of Management, Mumbai. Why Mumbai? Because Bangalore का मैंने कोई campus नहीं भरा था. See, होता क्या ना, understand this. Wellinger, it's already a 2.5 kind of tier college. अब उसमें भी अगर मैं उसका भी second campus ले लूँ, then damn, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा. So yeah, first preference, first merit, we got shortlisted, and we had an offer letter for the season of this MBA preparation. वो हमारा first offer letter था. After which we also got a convert from IRMA, and I was like, damn dude, at this percentile, if you get converted into IRMA, this actually means that
योर इंटरव्यू वॉज फैबुलस. नहीं, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रही, बट या इट्स अ फैक्ट, बिकॉज पीपल एट 97-98% आर ऑल्सो दे डू नॉट कन्वर्ट. तो या इरमा वॉज दी कन्वर्जन. नेक्स्ट वॉज गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. वहाँ पे हमारा वेट लिस्ट हो गया था. आई वॉज एनी वे नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ दैट, बिकॉज वो इंटरव्यू में वो रैपो बिल्ड ही नहीं हुआ था. एंड यू एग्जैक्टली नो राइट हाउ इट गोज, और वो कैसा गया होता है. सो यू ऑलरेडी स्टॉप एक्सपेक्टिंग थिंग्स आउट ऑफ दैट. सो देयर वी वर वेट लिस्टेड. For School of Management, we converted all the 4 courses. Well, मज़ा आ गया, genuinely मज़ा आ गया, because I was somehow expecting it, because like वो interview genuinely अच्छा गया था. After which it was IMI Delhi. Okay, now this was like absolutely not expected, because जो पैनलिस्ट थे वो वैसे ही इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे. एंड लाइक द इंटरव्यू वेंट वेल फ्रॉम माई साइड, बट आई डिड नॉट थिंक दैट इट वॉज गुड फॉर देम. हाउएवर वी वर शॉर्ट लिस्टेड फॉर HR. येस, तो वहाँ से भी हमारी शॉर्ट लिस्ट आ गई थी, ऑफर लेटर. नेक्स्ट वॉज तापमी. वेल, तापमी से भी हमारा HR की शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ 2 कोर्सेज आई वॉज वेट लिस्टेड. Next, XIMB का तो we are yet to receive the results. However, I'm positive about it. And then last was BIMTech. तो BIMTech का भी रिजल्ट आ चुका, एंड yes, उसका भी ऑफर लेटर आ चुका है हमारे पास. सो या, इट्स अ प्रेटी ग्रेट फीलिंग एट द एंड. इफ़ यू क्वेश्चन विच MBA कॉलेज एम आई जॉइनिंग, वेल इट्स फॉर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट. बहुत सारी चीज़ें सोची हैं, बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके ये डिसीजन लिया है, एंड आई होप इट टर्न्स आउट वेल. If you have any doubts regarding anything about the MBA preparation, interviews, journey, well, do ping in the comment section. I hope I can help you. Till then, bye bye, take care. Thank you so much.